Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will be covering chapter 1 of chemistry, class 10, wherein I will be discussing chemical reactions, chemical and physical change, balancing of chemical equation, and characteristics of chemical reactions. So let's get started with the video. Now, in order to understand chemical reaction and equation, let us first understand what is chemical reaction. तो chemical reaction बेटा वो होता है जिसमें हमारा chemical change include होता है और हमारे new substances बनते हैं with new properties. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to give a new substance called water. Up in order to understand chemical reaction, let us first see chemical change. क्योंकि chemical reaction के अंदर क्या हो रहा है, हमारा chemical change हो रहा है. तो chemical change क्या होता है? chemical change के अंदर क्या होता है? chemical reaction होता है जिसमें हमारा एक new product बनता है और हमारा जो chemical bonds होते हैं हमारे वो break होते हैं और एक हमारे नए different atoms बनाते हैं. तो इसमें क्या है? A chemical change involves a chemical reaction to produce a new product. Chemical bonds between atoms break and then form to connect different atoms. Physical change क्या होता है? ये आपने पहले अपनी younger classes में भी पढ़ा हुआ है बच्चे. Physical change होता है जिसमें हमारा साइज शेप चेंज होती है. साइज और शेप चेंज हो रही है और वो क्या होता है? फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल होता है. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल में हमारा मेल्टिंग है, बॉइलिंग है. बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम आइस टू वाटर इट गेट्स कन्वर्टेड. सो आइस क्या थी? पहले हमारी एक सॉलिड फॉर्म थी. तो आइस से वो किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में कन्वर्ट हुआ. तो हमारी क्या इसमें चेंज हो रही है बेटा? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. ओके. अब कुछ एग्जांपल्स हैं. हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम चेंजेस दैट यू सी इन योर एवरीडे लाइफ. नाउ फर्स्ट पिक्चर हमारी किसकी है? फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ वेयर अ लेडी इज कुकिंग द फूड. सो कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. इसमें क्या होता है बच्चे? न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं. तो केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा क्या है? फिजिकल चेंज है. फिजिकल चेंज में क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल. सो नो न्यू सब्सटेंस हैव फॉर्म्ड. नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर, ये हमारी क्या है? it is of ripening of fruit. तो ripening of fruit now in this case tomato, color of tomato changes from green to red. So it is a chemical change because we cannot get back the original one and it is irreversible. So anything that is irreversible and we cannot get back into its original form, so that we call it as chemical change. Next example is a fourth picture is of burning of wood, burning of candle. So burning of candle is both a physical and a chemical change. Now burning of candle, when you see burning of candle, melting of wax is a physical change, but burning of candle is a chemical change. Because when candle burns, it releases carbon dioxide and water. Next picture, fifth picture is of digestion of food. So digestion of food is a chemical change because food is broken down into smaller molecules and there is a formation of new substance. Next picture, sixth picture is of boiling of water. Again physical change.
where water changes into steam and is reversible. Rusting of iron. Rusting of iron is a chemical change because in this case new substances formed and iron changes into rust and it is irreversible. Now the last one where melting of ice cream is given. So melting of ice cream is again it is like melting of ice. So it is a physical change. All the shredding, boiling and chopping, these are all physical changes. So chemical reaction is which involves chemical change and in which one or more new substances are formed, that is termed as chemical reaction. Now what is chemical equation? Chemical equation is representation of chemical reaction in terms of symbols and formulas. Wherein we will left hand side of chemical equation we call it as reactants and right hand side of chemical equation we term it as products. Here are some examples of chemical changes: souring of milk, digestion, cooking of food, baking a cake, rusting of iron, mixing an acid and a base, burning of candle and mixing soda and vinegar. Physical changes we already discussed: melting of ice cube, boiling water, shredding of paper, baking a bottle, chopping vegetables. So these are all our examples of physical change. Now next comes characteristics of chemical reactions. First is change of state. So here are 5 cases: change of state, change in color, evolution of gas, change in temperature, and last one, fifth one is formation of precipitate. Now first is change of state. Change of state. So when hydrogen reacts with oxygen, so it gives liquid, it gives water. So there is a change in state. Next one, change in color. When iron nail, it is dipped in copper sulfate solution, the color changes from blue to green. Third one, evolution of gas. When sodium reacts with water, bubbles of hydrogen gas is seen. हाइड्रोजन जब सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, गैस इवॉल्व हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है. चेंज इन टेम्परेचर. When water is added to quicklime. Quicklime is calcium oxide. तो क्या होता है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगेन गैस इज प्रोड्यूस. सो क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इवॉल्व होती है हमारी. सेकेंड वन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड. So what will form? Again heat is released. Formation of precipitate. Now what is precipitate? Something that is insoluble in water. That is called as precipitate. When silver nitrate solution reacts with sodium chloride, so it gives sodium nitrate and potassium chloride. Another example is of potassium iodide when reacts with
lead nitrate, it gives potassium nitrate and lead iodide. In order to represent, next one is, in order to represent a chemical equation, we use some symbols. So first one, arrow. It indicates that it indicates the reaction, result of reaction. Now the second one, forward and backward arrow, when both are used, so it means the reaction is reversible. Solid, we like hydrogen reacts with oxygen, it forms water. So hydrogen is in this case is a gas, so we term it as gas. And solid, we take another example like zinc reacts with dilute hydrochloric acid. So zinc in this case is solid, so we term it as a solid. Next one, downward arrow, it indicates precipitate, liquid, when a reactant or a product is in liquid state, so we use L in that case. Like water, aqueous, AQ is used for aqueous, G is used for gases, to represent gaseous states. And forward arrow, upwards arrow, that is used to indicate a gaseous product. अब हीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीट को हम यूज करते हैं ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल हम से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो और एटीएम का मीनिंग क्या होता है? एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हेनेवर प्रेशर इज अप्लाइड टू अ केमिकल रिएक्शन, so we use ATM in that case, atmospheric pressure. When simple pressure is applied, we use pressure. And when particular temperature is applied, let's say 0 degrees Celsius, we write the particular temperature that we are applying to that reaction. When a catalyst is used, like in this case manganese dioxide is used, so we use MnO2.